अगर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ने मेरे बलबीर कौर रंधावा वालों सत श्री अकाल सलाम नमस्ते लैके हाजिर हाँ तुहाडा प्रोग्राम हैल्थ टॉक शो जिहदे विच असीं बात करते हैं साडी फिजिकल हैल्थ मैंटल हैल्थ इन्वायरमेंटल हैल्थ ते दे नाल नाल स्पिरिचुअल हैल्थ दी, क्योंकि ये 4 पिलर्स साडी हैल्थ दे हैगे जो कि बैलेंस दे विच होने बहुत ज़रूरी हैगे। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता तुहाडा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होए, बट अज जिहड़े साडे गैस्ट आए ने सानू कुछ खास जानकारी देने वास्ते काशी टीवी ते आए हैं। स्पैशली जो असी ग्रो हो रहे होंगे कई बारी बचपन तो लैके हुण तक साडे कई जिहड़ी चीज़ां होंदियां उन्हां नूं असी सामना नहीं करना चाहते देखना नहीं चाहते। स्पैशली साडा जिहड़ा कॉन्फिडेंस हुंदा जो लिंक हुंदा साडी बॉडी दे नाल ते वो कई रीजनस हो सकते हैं कि असी बॉडी विच कॉन्फिडेंस नहीं अपने शरीर नूं लैके सानू कई चिंतावां हुंदियां ने। ते अज मेरे नाल जिहड़े काशी टीवी ते खास गैस्ट दिस ब्यूटीफुल लेडी जो साडे नाल हैगे हैं काशी टीवी ते सानू जानकारी देने वास्ते हैं कि असी अपने आप च किद्दां खूबसूरत महसूस कर सकते हैं, सैल्फ कॉन्फिडेंस अपना किद्दां वधा सकते हैं, क्योंकि साडी नज़र दे विच है कि परमात्मा ने हरेक चीज़ नूं बहुत ही खूबसूरत बनाया है। यह साडा नज़रिया होंदा देखण वाला कि सानू कोई खूबसूरत लगता है तो कोई नहीं लगता, बट एवरीबॉडी इज़ ब्यूटीफुल। सो उहियो जिहड़ी ब्यूटीफुल चीज़ां ने वो साडे नाल शेयर करने वास्ते अज काशी टीवी ते आए हैं मीना कुमारी। नाम ही इन्हां दा बहुत प्यारा है, सो आई लव हर नेम एज आई मैंशन बिफोर इज़ वेल टू हर। हैगा कि जिहड़ी सैल्फ कॉन्फिडेंस जिहड़ी सैल्फ बॉडी कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़रूरी होंदा है, क्योंकि कई बारी ये करके असी कई फील्ड दे विच अपने आप नूं घाटा महसूस करते हैं। पर अज जिहड़ा सानूं इन्फॉर्मेशन है देंगे ए बजुर्ग तो लैके बच्चों तो लैके औरतां मर्द ते सारे ते लागू होंदी है। मेनली इन्फॉर्मेशन तो लेडीज़ लिए हैगी है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग ये सारे ते असीं लागू कर सकते हैं, क्योंकि जिहड़ी औरत हैगी है जो उहदे कोल इन्फॉर्मेशन होंदी हैगी है तो सारियां नाल परिवार दे विच शेयर कर सकती हैगी है। सो जिहड़ी लेडीज़ ने उन्हां दे लिए भी इन्फॉर्मेशन है तो बेसिकली परिवारिक तौर पर सारी है जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है तुसीं शेयर कर सकते एक दूसरे दे नाल। ते ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए मैं इंट्रोड्यूस करानी हाँ काशी टीवी ते वेलकम करदी हाँ मीना कुमारी दा जो कि बॉडी कोच ने, बॉडी कॉन्फिडेंट कोचिंग के विच माहिर ने। सो वेलकम करते हैं मीना, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, आप काशी टीवी पर अपना टाइम निकाल कर। Thank you very much for having me as well. Like you introduced me, my name's Meena Kumari. बहुत प्यारा नाम है। Well, thanks to my dad who absolutely loved everything. All your viewers will know Meena Kumari as the lady from the Bollywood. Wow. And dad loved the name, so I ended up with the name. And one thing he said to me, इसकी तरह तुम पीना मत। इसके बाद, but actually, you know, life's one of those things. I enjoy everything about life, but everything in moderation. So MK आपका नाम भी है। So जैसे शाहरुख खान है वैसे MK हमारे आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। बहुत ही आई थिंक यू नो तुम्हारा जो सा सेल्फ कॉन्फिडेंस है मीना वो बहुत अच्छा है। एक आपके जो से स्वभाव में है एक यू नो अपनापन सा नज़र आता है, ये आपकी निशानी है कि येस यू आर डूइंग रियली गुड कोच यू आर एंड यू नो हाउ टू गेट पीपल्स अटेंशन वेरी नाइस। तभी आपका नाम जो सा आपके डैडी ने जो रखा है बहुत प्यारा नाम रखा है। सो मीना मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो सी ये जर्नी थी कैसी रही, आपने कैसे स्टार्ट किए, why did you want it to be what you are? So my career started in banking 25 years ago. फिर in 2015 my husband and I we got to Singapore. जी Singapore में everyone has to be small. दुकान में जाते थे वो बोलते थे नहीं 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 तुम्हारे लिए कुछ नहीं है मेरी साइज देखकर। Okay. Like and even for me it was like I'm not buying for me, I'm buying for my family, friends. And it was literally South Asian culture, jo bhi ho, everyone wants to be small, petite. Nobody likes, but you know, they don't like the bigger woman. They think there's something wrong with you. And then I decided, you know, all the other authors come up to me, you dress really well, love the way you dress, love your confidence. So then I decided, you know what, I couldn't work there, so training. So I learned how to become a stylist for plus size women. Then I was doing colouring. You know, sometimes as women हम गलत रंग पहनते हैं. So we wear colours where sometimes it drains us. So when we buy clothes, we should look at our hair colour, eye colour,
and skin tone. Okay. Yeah, so there's good scientific stuff behind that as well. So then I learned all that. Then I started coaching women. I couldn't work, so muft mein sara, mole mein all the aurtein used to come in. So you practice everybody. Exactly. Okay. So when I came to UK, I used to do the shopping for them and take things back for them. Ah. And that really worked because my family was here. It's just me and my husband. So I used to come and do the shopping for them as well. And then it wasn't fulfilling me. Upar se sare kapde, everything, makeup, everything looks good. जो अंदर की बात है वो अलग सी है. Very true. Yeah. So you put makeup on, you dress well, and you feel amazing. But whatever you're feeling about your body, that doesn't change at all. वो अंदर का चेंज करना था Yeah, so आपको I'm like, yeah, तो सब good, I can do everything, that's no problem. But अंदर का, I want to get to deep rooted information because I've always in my jobs I want to find out the root cause. I have to find out like in banking क्यों ये हो रहा है, कहाँ से पैसे आए, क्यों आए, so it was a bit like that. I was putting my banking into this. So आपकी फैमिली में मुझे लगता है जरूर बैंकिंग का काम जरूर हो रहा होगा. But it's really good thought कि जब तक हमें किसी चीज़ की रूट नहीं पता होती तब तक हम उसको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग तो रूट से ही होना जो भी होना. जैसे आपने पहले देखा भी हाँ कपड़ों से हम बाहर का ठीक फिजिकली वी कैन लुक एग्जैक्टली पर जो हमारा इमोशन दिमाग में क्या चल रहा है वो अगर हमें ये कहता रहेगा कि नहीं तू अभी भी बड़ी लग रही है मोटी लग रही है वटएवर एग्जैक्टली कितने जो से वर्ड हमारी कम्युनिटी में बेसिकली यूज होते हैं तो वो जो से वर्ड्स है वो फिर भी आपके दिमाग में चलते रहेंगे नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल यू लुक फ्रॉम इनसाइड. बात जो मुझे आपकी अच्छी लगी कि जब अंदर से खूबसूरत है तो इट डजंट मैटर अबाउट आउटसाइड. बाहर से तो दिखने ही है राइट इट्स इनसाइड. हम क्या करते हैं क्या अंदर की इमोशंस है इस पे वो प्लास्टर लगाते हैं फिर प्लास्टर लगाते हैं फिर प्लास्टर लगाते हैं ऑल इमोशंस के ऊपर प्लास्टर. एक दिन वो जो स्टिकीनेस है ना दैट गोज तो फिर दिस इज व्हेन पीपल बिकम डिप्रेस्ड suicidal, they don't like themselves, they self-harm. All these things come into it, especially for women, because we've always been conditioned from a very young age to look amazing. Kisi aur ke ghar jana hai, kisi aur ki hogi, from a very, very young age. So this is when I thought, right, okay, I looked at my life, and something similar happened to me as well, whereas when I was getting married, I was a size 10 or 12. People thought I was big. Kali hai, or fir moti hai. A size 10 or 12. I was 17 years old. And that was said to me, and I'm like, this is ridiculous. I fell pregnant, and I had my first child at 20, second child at 25, and I just ballooned. I went through postnatal depression, and there was a little bit of self-harming that I haven't touched on too much, but there was a little bit of that going on as well. Sadly, my life at the moment has changed. I lost my husband just over a year ago, but this is all stems from how I felt, and this is when I qualified as a body confidence coach because I did what I did and worked within myself. I am where I am today to helping others. So proud of you. कि जिंदगी में कई बारी जो से हमारे साथ हादसे होते हैं या जो एक्सपीरियंस आई थिंक ऑल एक्सपीरियंस आर गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. पर आपने जैसे आपकी शादी के दौरान जो फील किया सिर्फ आपने नहीं हम देखते कि काफ़ी औरतें जो से हमारी कम्युनिटी में है कलर की वजह से या हाइट की वजह से क्या है कि हमारी कम्युनिटी को नुक्स निकालने की कई बारी आदत है. नो मैटर कि कोई परफेक्ट भी हो उसमें भी हम नुक्स निकाल सकते हैं. वी डोंट समटाइम कि उसकी अच्छी चीज़ें नहीं देखते बिकॉज वो वो जनरेशनल है. हम बोलते हैं कि हमारे कम्युनिटीज़ में बोलने की आदत है लेकिन ये आदत कहाँ से आई. यू थिंक अबाउट लाइक छोटा बच्चा खाता है खा ले सानी प्लेट में ना रखो पैसे इसके दिए हैं. You think about all the dialogues we use or dialogues have been used over the years from daddies, nannies, chachis. It's just gone on and on. So this person, it develops from the age of 7. The eating emotional habits happen from the age of 7 and the confidence. So these days children from the age of 7 are not liking their body. And this is conditioned from a very, very young age. तभी अब आप देखें तो कॉस्मेटिक कितनी है. अगर देखें टीनेजर पर इतना प्रेशर है. पहले तो लड़कियों पर था अब मर्दों पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वी हैव टू लुक दिस वे दैट वे. अगर अब कोई रियलिटी में अगर देखें तो कोई अगर मोटा इंसान आता है तो हम कहते हैं इट्स अ फुल ऑफ डिजीज़. एग्जैक्टली. ये उनका पहला होता है कि सब जो उनसे डिजीज़ है
मोटापे से जुड़े हुए हैं, बट मैंने NHS में काम किया है, ये जरूरी नहीं, आपकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो सी एनर्जी लेवल अच्छा होना, मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, 100%। तो बाकी जो सी बातें वो बाद में आई है, यू शुड बी हेल्थी, बट जो सी इनसाइड का जो सा आपका बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड मैंने देखा कि हार्ट अटैक पतले लोगों को भी होता है, 30 छोटे लोगों को होता है। वो है कि इनसाइड जो है हमारा जब हैप्पी नहीं है, हम अंदर से खुश नहीं है, तो बाहर दिखावे का कोई फ़ायदा नहीं होता कि हम जितनी मर्जी फिजिकल एक्सरसाइज कर ले, बट इनर, it's the inner peace. Do you know what people look at me? It's called thyroid. People are giving me diseases. Thyroid है, blood pressure है, diabetes है. So you know, there's 5 things people, and I'm like, kuch nahi hai. I'm so sorry. I'm so sorry. There's nothing. I know I'm slightly overweight, but I'm working on it. I don't have anything. You know what I need to do? I'm eating well. I'm drinking well. I exercise. I do everything, and I'm healthy because I am happy from the inside. And साथ में ये बात है मीना कि जब जरूरी नहीं है कि I think God has made everybody different. 100%. किसी का size 10 है, 12 है, 13. There is a size अलग अलग 18, 20 जितना भी है, but as long as you are happy within yourself, अगर आप खुश हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, that's fine. That's the way your body works, isn't it? Oh, 100%. And that's what I'm saying, Kate. You know, when you look at statistics and pictures and stuff like that, so what I do is I work with clients on a one-to-one basis, or people say to me, Meena, can you do a workshop? Panche orte saath baithe, you know, chai, pani, vagare, you know, biscuits and stuff like that. We have a laugh. We talk about our bodies. You know, there's 5, 6 elements I look at. I look at the physical, the mental, emotional, the spiritual and the soul, the cultural. And then I do the color styling. And that's what I work on with these women. And we have such a laugh. We all sit around a table. And, you know, if I said to your viewers just now, I'll say, right, pen or paper lekar betho. चलो ले pen or paper लेकर आओ. We'll give you 1 minute. Exactly, to go and find a piece of paper. पेन और पेपर ले आए. So मीना ने एक एक्टिविटी आपसे करवानी है. So we're going to start in 1 minute. So Meena, you can tell something else within 1 minute. While they go and get the paper. Do you know, this is it. With ourselves, you know, we have to collectively appreciate and understand who we are from the inside. Once we understand who we are from the inside and love ourselves from the inside, then we can really move on, and then we can pass that on. If you know, when I talk about generation, तो आप बोलते थे कि you know सभी को बोलते हैं औरतों की आदत है वो पहले से है, लेकिन we have to break that mold now. वो behavior हमने learn किया. Exactly. We wasn't born like that. None of us are born like, you know, when बच्चे, think about it, when a child's young, do they know that if they put the hand on the fire they're gonna burn themselves? No, parents are no ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो. You know, we get conditioned from a very, very young age to say, don't do this, don't do that. That's true. It's true, isn't it? Because it's like, moti ho, kali ho, ye ho, ye ho. That all comes again from a very, very young age. और काला होना या मोटा होना अगर हम देखें तो डिफरेंट, अगर हम अफ्रीका में चले जाएं या दूसरी उनके मुताबिक जो सी ब्यूटी है उसकी every country has a different way they accept beauty. Some countries like very thin women. Some people like even bigger women, and some people like, you know, medium. It doesn't matter, it's culturally. But हमारा में ऐसे है कि ये नहीं गोरी होना चाहिए, लंबी होना चाहिए, पतली होना चाहिए. You know, all these things, where they all come from? कौन बोलता है कि ये होना चाहिए? Yeah? दिमाग. Exactly. चलो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स ने पेन और पेपर लेकर आगे होंगे, तो अब हम देखते हैं कि मीना ने हमारे से कौन सी एक्टिविटी करनी है. Right. I want सारी दर्शकों को बोलना कि I want you not to write 10 things you don't like about your body. चलो 10 चीज़ें लिखनी है कि जो आपको अपनी बॉडी, अपने शरीर, जैसे सिर से लेकर पांव तक जो नहीं पसंद है. 10 चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि आपको नहीं पसंद. Give them a minute to do that. Yeah, we'll give 1 minute. 1 minute, that's more than enough, because they'll write me a whole A4 page of what they don't like. Yeah, so that's good. So you know, again, when I talk about the physical, look at yourself. You know, I coach a lot of women who don't have mirrors in the house. Really? Yeah. Mirror, not. As in, yeah, शीशा नहीं है घर में नहीं रखते, because they don't like looking at themselves. Oh, that's a first time I heard that. Yeah. You know? So one of the things I do with my clients is show them, start off with a like compact mirror.
Because you can't, I can't say, okay, you haven't got a mirror in the house, and I go and get a 6-foot mirror. Yeah. That's not going to work. So one of the things I do help women with is how to look at themselves in the mirror, bit by bit, and learn to love themselves. That's the That's physicality. so emotional. It is. It is. You know, because अगर आपको अपने आप को देखना नहीं पसंद, I can't imagine that. You know, if you don't like looking at yourself. So he's going to tell me off. If you don't like looking at yourself, how do you expect other people to like you? I think we've given them a minute, right? Yeah. Okay. Now I'm going to give them 2 minutes now, because it's going to take longer. Write down 5 things you absolutely love about your body. 5 things. 5 things. Why is less? Okay, do you know what? Let's go with less. 3 things you absolutely love about your body. Seriously? Yeah. Okay, 3 चीजें अब आपने लिखनी है जो आपको अपने शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है. Just 3 things. मुझे ये नहीं पता कि मीना इतनी कम चीजें क्यों कह रही हैं. I will have a full list. Oh yeah, exactly. What things you like or you don't like? I like. You like? Yeah. I love it. Is it? I love it. Because I'm on a good side then. You're on my good side. Okay. You're probably the one person I probably don't need to see very often. Okay. Yeah. So, okay. Because you do love things about yourself. Yeah. But you know, it's just such a powerful exercise. When you write 10 things you don't like about yourself, and then when you have to write down 3 things you do absolutely love about yourselves, and then we'll give them 2 minutes and we'll go through that as well. Okay. But it's conditional. We don't know we don't like this about ourselves, but do you know where it's come from? Kisi aur ne bola hai. Yeah. And it sits in the subconscious mind forever and ever. So I have clients coming to me and even say to me, I don't like my fingers. When you look at the physical aspects, I don't like my fingers, I don't like my toes. They come up with things like that. Nobody said, oh, I don't like my stomach, I don't like my nose. Where's all that come from? It's somebody said to them, it's set in their brain, isn't it? Exactly. In mind that somebody has told me must be my nose is this way, or my lips, or and that's where it's come from. It's like a child. Again, let's go back to the scenario. Tell the child not to touch the fire, and that stays with that child, right? Don't touch the fire because I'm going to burn myself. बहुत खूबसूरत बात आपने कही है मीना कि जो थॉट्स हमारे होते हैं, जैसे हमें कोई कह देता है बचपन में कि तुम खूबसूरत नहीं लग रहे, या तुम्हारा नाक ऐसा है, या तुम्हारे लिप्स ऐसे हैं, कान बड़े हैं. कई बार हम ये बातें कह देते हैं बच्चों से. वो जो सा माइंड सेट है वो ही आपको बार बार दोहराता है कि ये बातें आपके बीच में है. यहाँ अगर आप अपने आप को वैसे अपनी नज़र से देखें तो आपको लगेगा कि बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आपको किसी ने कहा है कि आपके बीच में ये कमी है, क्योंकि उसमें कमी है, वो कह रहा है. Exactly. क्योंकि आप में तो कोई कमी नहीं है. यू आर फुलफिल्ड. परमात्मा ने आपको पूरा अच्छी तरह बनाया हुआ है, तो जो कह रहा है उसकी वजह से आप अपने आप को सोच रहे हैं कि आप में ये कमी है. चाहे वो नाक के जैसे इन्होंने बताया, या हाथों में आपको कुछ डिफरेंट लगता है, या फेस में कोई कमी लग रही है, तो वो इंसान की सोच में है, वो आप में कमी नहीं है. ये मीना हमें बता रही हैं. Exactly. It's so true. Yeah. So again, now the viewers have done the 2 exercises. How quickly did they write the 10 things, and how much thought did they have to put in the things they like? मीना ने अब ये बताया कि जैसे हमने पहले आपसे ये क्वेश्चन कहा था कि आप 10 चीज़ें बताएं जो आपको अपने बारे में बिल्कुल नहीं पसंद, तो कह रहे हैं कि कितना टाइम लगा था आपको ये चीज़ें लिखने में? ज़्यादा टाइम लगा था कि कम लगा था, ये आपने बताना है. और दूसरा जो सा इन्होंने दोबारा क्वेश्चन पूछा था कि 3 चीज़ें आपने कहा था ना. 3 चीज़ें. I went from 5 to 3. Because it's easier to do 3. 3 चीज़ें हैं वो आपको अपने बारे में कौन सी अच्छी लगती हैं, तो इसमें कितना टाइम लगा था? And I can guarantee you that it would take you, जो 10 चीज़ लगने थे फटाफट आपने लिख दिए कि ये पसंद नहीं है. जो 3 चीज़, वो things I said to like, you probably didn't. You had to sit there go, हाँ. कौन सी चीज़ है सच में है मेरे में ये exactly. अच्छी चीज़ है? ये अच्छी नहीं, ये अच्छी नहीं, ये अच्छी नहीं है. It would have taken you longer, and that's so guaranteed. All right. So again, it's a physicality. Don't listen to what people say, and you know, again, look what you're saying. तो आपके बच्चे के साथ, आपके बेटी के साथ, आपके लड़के के साथ, you know, your nieces, you have an impact on everyone. So we have to start from ourselves about the wordings we use. You know, before I did any of this, I had to really look at myself, and I had to ask my daughters,
because so much was put onto me from a very young age, you know, the responsibilities and how I felt about myself and my postnatal depression, how I felt about my body. I just didn't like it. My husband goes, I love you the way you are. I just got bigger and bigger. I didn't look at what I was eating because I was emotionally eating. Okay, so again, when you're emotional, we do damage to our bodies. We put in all the rubbish. Anything that's coming, we eat because we want to make ourselves feel better. So it's the emotional eating. Yeah, emotional eating. And then again, when you're happy, you're going on holiday, you're going, or you know, the girls are getting married, they will starve themselves. Again, we abuse our bodies by not giving it the right nutrition because we want to look like this zero size Bollywood actress for our wedding. And you know what I will say, you know, Bollywood women have a team of people. Subah se sham tak, you know, khana kya hai, pehna kya hai, aapke baal, this, that, वगैरह, everything is done for you. Whereas we don't have a team. और साथ में ये आधे से ज़्यादा is like, you know, it's the way they make things, the media make you look. Exactly. It's a brush painting, whatever they call. वो हमें लगता है air brushing जो सा है, मुझे तो half of the चीज़ ही नहीं पता. But आधे से ज़्यादा वो चीज़ें हैं, हम वो इग्नोर कर देते हैं. साथ में उनका जो सा प्रोफेशनल उन्होंने वो चूज़ किया हुआ है कि हाँ हमें ऐसा लगना है बिकॉज दे मेकिंग मनी विद दैट. Exactly. ये हम भूल जाते हैं. बट वी आर लिविंग एज अ, हम घर में हैं, बच्चों की लुक आफ्टर करनी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास वो नहीं है. No, they don't have that. So we just have this role model हमारे दिमाग में आता है कि ये नहीं, मुझे तो इसकी तरह बिल्कुल लगना है. बट ये देखिए उसके पास और कोई काम नहीं है. Exactly, that's what I'm saying. हमारे पास ये extended family है, काम, you know, even all the women these days, like, you know, when our daddies and nannies and moms, they weren't working, they were at home, so they can have these big meals. Ghar was saf sufa because mom would be at home cleaning all day and cooking all day. Women now, we don't have that luxury. We all have to go out to work. You know, when we come back from work, we have our children to do, we have this to do. So again, the physical aspect of our bodies, we abuse it because we don't sit down and, like, when we eat, हम ये ऐसे खाते हैं जल्दी क्योंकि नेक्स्ट काम करना. Exactly, कि अभी ट्यूशन में ले, उसको वहाँ लेना जाना, you know, we've got to take him to this tuition, got to take him to this one. So we just abuse our bodies, खुशी में और गम में, दोनों में we do that all the time. गम हो या बॉडी को abuse करो. Yeah, which is so true. We don't realize, जैसे आपने बताया, हम unknowingly कभी कभी पता भी नहीं लगता कि हम अपनी बॉडी के साथ ऐसे कर रहे हैं क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ है मीना कि सुबह उठे, बच्चों को रेडी करना है, हस्बैंड को जाना है, हस्बैंड को रेडी करना, ये एक और बच्चे को रेडी करना है. Hope my husband is not listening that. I have a lot of husbands not listening. Mine was spoiled and he knew that. Okay. तो उसमें क्या है कि you got actually family is dependent on men women जो सी उसके चाहे सास ससुर है, चाहे अगर उसकी शादी नहीं हुई, parents are dependent on her कि ये काम कर लेगी, इसके बाद स्कूल से आएगी या जो भी है कॉलेज से आकर इसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर वो अपने बारे में भूल जाती है. Exactly. क्योंकि वो सोचती है कि मुझे ये करना and that's it. Exactly. And जो खाने को मिला ठीक है, whatever's left over we call. But you know, having said that, I do have a couple of male clients who go through the same thing. So I don't want to keep saying it's women, but because I work with women, there are men who are stay-at-home dads now as well. Because wife, you know, whoever's got especially with the younger generation, whoever's got the capacity to go out and earn more money, that person will go, and the man will stay at home and look after the children. So it affects them as well because they lose confidence. उनमें ये भी है ना मीना कि जो उनसे हमारे एशियन मर्द हैं उनके पास भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा है कि इसने घर का सारा खर्चा करना है. Exactly. शादी आ रही तो इससे पैसे लेने हैं, इसने ये करना और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड देन उसकी वाइफ नेक्स्ट आ जाती है, उसकी स्टैंड बैक है ना, तो उसकी बैकबोन है. 100% कि वो पीछे से यहाँ खड़े हो. तो प्रेशर तो दोनों पर है, बट मेनली जो उनसे हम बात कर रहे हैं, इट्स मेरे हिसाब से इट्स लागू तो सारों पर होती है. चाहे वो फिजिकली, बच्चे को भी हम जब देखते हैं तो उनमें कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता है क्योंकि वो देखते हैं कि मेरे मम्मी ने या डैडी ने मुझे कहा कि ओ तू मोटा हो रहा है, या उसका रीज़न बिहाइंड क्या है ये नहीं पता. कई बार बच्चे को हो सकता है बुलिंग हो रही है स्कूल में या सर्टेन स्ट्रेस है एग्जाम की. तो ये जो सा फिजिकल है, इट्स फॉर एवरीबॉडी. The body confidence, it goes with everybody, but I just say because mum's the backbone of the family, because we women suffer more
and we don't talk about it enough because पढ़ाई के घर की हो गई, so we don't burden our mum and dad, we don't burden our in-laws, we keep it all good inside. और ये है कि जब लड़कियां कई बारी बड़ी होती है ना, मैंने देखा है कि कई कम्युनिटी में, आई मीन आई वाज लकी नॉट टू हैव दिस काइंड ऑफ, बट देयर इज लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन, उन्हें पहले से ही कहा जाता है तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर क्या करोगी, इतनी मोटी हो, तुम पतला होना चाहिए, तुम्हारा रंग ये है, या तुम्हें कपड़े ऐसे डालना चाहिए, तुम इतना बोलती हो, all those things which is like you born naturally, you can't do anything. You've got to embrace, and again when I talk about the physical, we look at us physically, then we look at ourselves mentally, and whatever we think internally, because we're not sharing our problems, and then all that mental health comes into effect. Depression, how many of our women get depressed at home? While they're working, while the children at home, especially women in their 50s, 50 plus, women, they're working, they've got children, family, this and think about what happens to these women when their children leave home. Son gets married, daughter gets married, mom's redundant. Yeah, mum and dad don't talk because they've got nothing to talk about, but they're doing their own things, and they've not had time for each other. So how many divorces are happening in our communities at this age now? A lot, because it's hard for them to connect. The thing is that क्या होता है कि जब यंग होते हैं, there is टाइम काम करना, काम पर चले गए, हस्बैंड वाइफ दोनों काम पर चले गए, एंड द ओनली टाइम दे हैव इज़ मे बी फ्यू आवर्स टुगेदर. वो भी एक गुड कम्युनिकेशन नहीं मैं कहूँगी कि वो भी घर की बातें थोड़ी सी होगी, अपने बारे में जो उनसी जानकारी एक दूसरे को देनी चाहिए वो नहीं होती. वो फिर आपकी बात सही है, 50 या 45 से हम देखते हैं 45 के ऑनवर्ड्स, that's why so many divorces. Exactly, and that's what again and then again that affects the body confidence. Why doesn't he look at me? Why doesn't he like me? Does he think I'm big? Does he think I'm too small? Does he think this? We start thinking our internal dialogues. क्योंकि मेरे साथ नहीं देखता है, उसको और लड़की को देखता है. Why does he come and say, oh she looked really nice? पर एक बात मीना मैं ये भी कहूँगी कि क्या होता है कि कई बारी जो उनसे हमारी एशियन लेडीज़ है ना, उनके पास टाइम नहीं होता. जब जो उनसे आदमी या लेडीज़ बाहर जाती हैं, एवरीबॉडी इज ड्रेस अप सो नाइसली, है ना, बट जब घर में होती हैं आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम इन पजामस, है ना, ऑल. एंड अगर आप बाहर जाते हैं वी ड्रेस अप एंड एवरीबॉडी थिंक्स भी ऐसे वो यहाँ बैठी होगी. It's not true because our lifestyle doesn't allow us to do that. And nobody wakes up with full blown makeup. Yeah, unless आप किसी drama जो or Star Plus serials. Yeah, I don't wake up like that. I had to tell my husband, I go, I don't look like that in the morning. No, I don't look like that. But again, it's that emotional comes into. When we talk about the physical, then the mental chit chat. And again, I talk about when I think of my clients, it's like a bad person on the left shoulder and a good person. We always listen to that bad person. So I do exercises to try and let that bad person talk in the background. Just ignore that one. So this good one will take over that. So I've had women in their 70s now try and recondition how they think. Oh, that's beautiful. Because because we as women, we listen to everybody. Yeah, we like to give opinions, but then we listen to everybody as well. And it's not always great stuff. So again, surround yourself with the right people who uplift you, not zap out the energy. Very true. Yeah. मैं अब अपने जो उनसे देखने वाले उनको आपकी ये बात बताऊं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मीना ने हमें एक बात जो बताई है कि हमें अपने सराउंडिंग जो उनसी है, हम हमेशा दूसरों को एडवाइस देते हैं लेकिन अपने पर भी कई बारी लोगों की एडवाइस जो उनसी है वो लागू कर लेते हैं, जो उनसी बैड होती है बेसिकली. अच्छी बातें हम जल्दी नहीं सुनते, वो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं. लेकिन इनका कहना है कि एक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाए कि एक जैसे गुड आदमी है, यहाँ पर एक बैड है और जो उनसा गुड है आपने उसकी बातें सुननी है, जो उनसे बैड है उसको जैसे इग्नोर करना है, उसको चैट करने देना है. तो जो उनसी गुड बातें होंगी वो आपके जो उनसा ब्रेन है उसमें एक माइंड सेट हो जाएगा कि ये बात सच्ची है और ये राइट है.
एंड दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि पॉजिटिव लोग जो उनसे हैं उनके साथ रहें, क्योंकि जितने पॉजिटिव आपके पास सराउंडिंग होंगी वो आपको पॉजिटिव बातें कहेंगे, जो नेगेटिव होंगे तो फिर आपके उसका असर जो उनसा वही उतना आप पर होगा। सो पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो पॉजिटिव कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ लर्न करेंगे, कुछ पॉजिटिव आप उनसे कहेंगे, क्योंकि वी रिफ्लेक्ट, जैसे एक शीशा होता है जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो वो अपना हमारा चेहरा हमें नज़र आता है। तो इसलिए जो उनसे पॉजिटिव लोग होंगे अगर आप उनमें रहेंगे तो आप और ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। सो दैट्स अ रिफ्लेक्शन। सो मीना, थैंक यू सो मच। You're very welcome. You're very welcome. और थोड़ा सा और मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे अपने व्यूअर्स को। Okay, with the mental health, the one thing I would say is like everyone has 24 hours in a day. जी। Okay? हम बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तू तो सारे दिन सेल्फ केयर करती हो, मेरे तो टाइम नहीं है। Every single person has 24 hours in a day. Okay? 8 घंटे, if you're lucky, you sleep. Then you work 8 hours, right? So that's 16. Yeah, 16 हो गए। Yeah, 16. लिख लेती हूँ मैं। Exactly. I was a bank manager. Maths is not my favorite subject. I know. But then whatever's left, okay, घर का काम, all that kind of stuff, and then you have half an hour. Half an hour now हो तो सिर्फ start with 5 minutes. अपनी आँख बंद, आपके kettle चाय when you're making it, just stand there. Don't wash up or anything. Just stand there, and then just put your hand on your heart, shut your eyes, and just breathe. That's your mental health. You have to breathe. We forget how to breathe. उंडा सांस नहीं लेते, ऊपर से लेते हैं क्या? Yeah, that's so true. Because दिन में अगर हम सोचे कितने काम करते हैं, वी नेवर थिंक अबाउट वी आर ब्रीदिंग, कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सांस लेना, सांस ना आए तो वी विल डाई। Exactly. एंड उसको ही हम ऊपर नीचे, कभी आगे कभी चले गए, कभी एंजाइटी में उसको ले गए, कभी डिप्रेशन में ले गए। सो मेनी थिंग्स वी आर गोइंग थ्रू, बट वी डोंट रियलाइज। Exactly, we forget the strength of breath. I know a lot of people do meditation, but when you meditate, do you think about your breathing? People say, yeah, well, I've spoken to so many, yeah, I meditate every single day. Okay, how long do you meditate for? I do it for an hour. So how many times do you breathe? How do you breathe? How deep, how shallow are your breath? Oh, I didn't think of that. Watching your breathing is very important, oh, isn't 100%, 100%. And do you know that calms your mind? आँख बंद करके 3 सांसें उंडी लो, and then let them out. You'll feel so much, just 3 breaths. That's so powerful. सो मीना ने बताया जैसे कि अगर जैसे हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे हम सोते हैं, 8 घंटे काम, आई हैव रिटन, यू सी, 8 घंटे काम करते हैं, उसमें से सिर्फ हमें आधा घंटा अपने लिए निकालना है। अगर वो भी नहीं निकाल सकते, 5 मिनट, सिर्फ ये कहते हैं कि अपने लिए 5 मिनट निकालें, जिसमें आपने सिर्फ अपनी ब्रीदिंग जो उनसे है उसको देखना है कि कैसे आ रही है। जस्ट रिलैक्स, जहाँ पर भी है, ज़रूरी नहीं आपने कोई एकांत में बैठना है, चाय बना रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपने सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को वॉच करना है कि वो अगर 5 मिनट नहीं कर सकते तो 3 ब्रेथ्स जो उनसे है, जस्ट वॉच दैट, वो किस तरीके से आ रही हैं और जा रही हैं, जस्ट वॉचिंग दैट। कहते हैं कि उससे भी आपको रिलैक्स मिलेगा। स्टार्टिंग ऑफ सेल्फ लव है। सो ये तो हम, आई थिंक एनी बॉडी कैन डू दैट, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। तो सेल्फ लव करना, जो सा अपने आप से एक प्यार करना, वो मेंटल हेल्थ के लिए जो इम्प्रूवमेंट करता है, वो हमें और बताएंगे अब हमारी मीना कुमारी। Do you know, we talk about spiritual and soul. जी. Okay? That's another that's another form of self-care. Spiritual. हम भगवान, we pray to whoever. Okay, that's fine. But do we just pray and ask for things, or do we mainly we ask for things? We ask for things, or do we show gratitude to say thank you? Ke ye hai. We always think about ye nahi hai. Definitely. Yeah, it's easier to say oh, if you give me this, I'll do chadawa, I'll give you prasad, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा अगर मेरी ये बात, वो पैसे दूंगी, whatever that thing. But दिल से करो. You don't have to just do it at home. The other thing is, I say, every time you go to bed or you wake up in the morning, you have 3. This is why the power of 3 is very important. Like when I said 3 things about your body you do like 3 things you're grateful for. आज मैं उठी, श्वास ले, I can breathe fresh air. Yeah, I can get out my bed. Very, very. I can stand up on my 2 feet. And if you are ill health, fine. But guess what? If you have carers coming in, you should be grateful for these carers are coming in to look after you or look after your family.
When do we actually give gratitude to the things that we do have? We always say ये नहीं है, ये नहीं है. ज़्यादा हम ये चीज़ देखते हैं कि जिसमें हमें कमी लगती है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है. बट जो आपने कहा कि थैंकफुलनेस, जो हमें चीज़ें जो सी चीज़ हमारे पास नहीं है हमेशा उसकी कमी हमें ज़्यादा लगती है. बट हम भूल जाते हैं हमारे पास 100 चीज़ हैं लेकिन एक चीज़ जो नहीं है वो हमारे मन को ज़्यादा लगती है. बट आई थिंक जब अगर हम थैंकफुल हो जाएं कि ये हमारे पास इतना कुछ है, अगर ये नहीं है तो इट डजंट रियली मैटर, चलो हो जाएगा, या सर्टन हम ऐसे चीज़ करेंगे तो हमारे पास शायद ये चीज़ भी आ जाए. तो इट्स मेक लाइफ रियली ईजी. आई मीन अगर देखें रियलिटी में है ना मीना कि हमारे पास बहुत कुछ बहुत ज़्यादा दिया हुआ है हमें खुदा ने, 100%. बट कुछ चीज़ें नहीं होती उसको हम ज़्यादा करते हैं. बट जैसे आपने बताया कि अगर हम देख लें कि ये फिर क्या, इट डजंट मैटर, शुड बी थैंकफुल कि आज मैं उठ सका हूँ, सांस ले सका हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं अगर केयरर्स आए हैं तो उनकी भी खुशी करनी चाहिए कि मुझे उस परमात्मा ने ये प्रोवाइड किया है. कईयों को ये फैसिलिटी भी नहीं होती. सो आई एम सो लकी कि मेरे बच्चे हैं, आई एम स्माइलिंग. कई लोग स्माइल नहीं कर सकते. क्योंकि अंदर अगेन मेंटल हेल्थ, सांस लो, जाने दो. And it's all, everything, the whole spirituality, the soul side of it. What do we do for ourselves? When we talk about self-care, self-love, wo buzzwords ho gaye. Self-love is literally sitting there with yourself and appreciating who I am, my body, every single bit of my body. And that's one thing we don't do. It's when I talk about body confidence and I teach women, again, like I say to you, that women don't look in the mirror. हमारा शरीर चल रहा है. Every single thing, you don't like your fingers, you don't like your nose, you don't like your eyebrows, your eyes, your ears. Every single thing is there for a reason on your face. Absolutely. अब देखिए ट्विंस भी जोन से होते हैं ना, आई विल से, चाहे वो देखने में सेम हो फिर भी उनका बिहेव डिफरेंट होगा. सो गॉड इज नॉट मेकिंग एवरीबॉडी सेम. सो बॉडी जोन से हमारी कभी भी किसी के जैसे नहीं हो सकती. वी हैव टू एडमिट दैट कि जितने मर्जी चाहे हम बोटॉक्स कराएं, जो मर्जी करा लें, किसी भी तरीके के देखना चाहते हैं हम किसी की तरह, but it's not going to happen. No. So you think about your fingers on your fingers, your hand on fingers on your hand. None of them are the same. No. अलग अलग है. So आदमी अलग है. हम one mum can have 5 kids. सभी अलग है. You will not find the similarities, but they're not. No one's identical. Absolutely right. Yeah, identical. बहुत खूबसूरत बात है क्योंकि अगर हम किसी बगीचे में जाते हैं मीना, वहाँ पर अलग अलग के तरह के फूल है, कोई गुलाब का है, कोई गेंदे का, कोई चमेली का. अगर हम कहें कि बस रोज के ही फूल है तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा. You have to have a variety. Variety is the spice of life. और उसकी स्मेल अलग है. एक जैसे हर एक कैरेक्टर डिफरेंट होता है, उसमें एक ताजगी होती है, एक अपनापन होता है और वो अच्छा लगता है सबको. But we don't want to see everybody same. But we want to be these people on screen. वो जो कि फेक है. Exactly. They're not real. They're not real. They're absolutely not real. And then again, culturally, culturally, like we touched on earlier on, every country has different ways of having different kind of people. Ji. Yeah. So appreciate who we are. Sometimes people are a bit shy because ancestral. It's come down the line. Where do we all evolve from? Someone's probably got a gene somewhere that they're bigger. Someone's probably, in their grandparents or somewhere, lamba hoga. That we don't see it now, but when you look so many generations back, there must be somewhere it's come from. True. So, my thing is that language, I touched on about my children. I had to apologize to my girls. I goes, did I say anything bad, girls? They goes, Mom, yeah. And I'm like, okay, this is time for me to sit there and go, I'm so sorry. What can I do? Because I didn't know then, I know now. Because all I was doing is putting my emotion onto you guys. Oh, that's so sweet. It's so nice. It's reality, isn't it? It's reality. Realizing. Realization to say, have I damaged them? How much damage does a parent do? Because we're just in our own world. You don't realize. You don't realize. And it's like, talk to your children. Tell them, again, I say to parents, do you sit down as a family to eat together? Does the child see mom looking at labels all day long? You're fattening. The language the child picks up. You're fattening here, I can't eat this. Do they sit down to eat together? Or does mom just like, kind of plate me?
So the kids pick up on all this. So it's really, really important, like, because the child will mirror image the parent. Very true. We don't realize, because I can say, I work in a school as well. You don't realize children remember everything. We think बच्चा इसको तो कुछ पता नहीं चल रहा. But अगर आप बच्चे से पूछे, 25, 30 के जब होते हैं, या even in old age, जैसे जब बचपन में ना मैंने ऐसे किया था, मेरी मम्मी मुझे ऐसे करती थी. They remember. We don't realize, पर हम सोचते हैं चलो कोई नहीं, बच्चों को कौन सा पता लगता है, we talk whatever we want to talk or do whatever we want, कि भूल जाएंगे. They don't forget. आपने जो ये बात कही ना कि हम एक रिफ्लेक्ट करते हैं बच्चों के ऊपर, जो हम कर रहे हैं, जो माँ कर रही है, जो पिता कर रहा है, घर में जो भी है सदस्य है, नाना नानी दादा दादी, बट माँ के साथ क्योंकि बच्चों का टाइम ज़्यादा होता है, मोर लाइकली फादर के साथ भी होता है, लेकिन जैसे हम आज ज़्यादा मेंशन उनका कर रहे हैं, तो जो उनसी मदर होती है बच्चा देखता है कि मेरी माँ क्या कर रही है, कैसे खाना बना रही है, कैसे अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रही है, या क्या सोचती है अपने बारे में, या फैमिली में वो अपने आप को कैसा महसूस करती है, अपने बारे में क्या सोचती है, हाउ शी गोज़ विद फ्रेंड्स. वो सारी बच्चे जो उनसे पिकअप करता है, वो अपना एक उसी तरीके का पैटर्न बनाता है जो कि माइंड्स में उसके सेट होता है कि हाँ मेरी मम, अगर वो कॉन्फिडेंट है अपनी बॉडी के बारे में, अपने हेल्थ को लेकर हैप्पी है, तो वो भी उस पर रिफ्लेक्ट होता है उसका. 100%. And the other thing as well, our bodies, औरतों की bodies changes, right? So we're born, then we become a toddler, then an adult, then we go through period stages. Our body changes, become, adolescence, body changes, become a teenager, then we become, we get married, then we kind of become a mum. So look at the pounding on our body we have. Yeah, or how a woman's body changes, and if we don't love ourselves, not only that, it doesn't end, because then it's like the stress levels and all that kind of stuff, and then we go through menopause, and so our body changes again, weight puts on. So again, like when I see women and I say to them, okay, we'll go on to styling on that one now, because it goes on nicely, right? Yeah. Because our body, the reason why I said that, because our body changes. Yeah. But few tips, I say, don't follow fashion. Follow comfort. If there's a fashionable colour going, fine, but find it through comfort. It's no point going, especially through when you get older or you go through periods, our body temperature changes. Our stomachs get bigger when you're on periods or when you're in menopause, We sweat a lot. When you think about girls, 13, 14-year-olds, I do a little bit of, like I work at the school, I help at the school when there's exam time. Yeah. Self-care. Mums, teach your children. If they need to kind of, with the girls, if they need to have their hair removed, let them remove their hair so they don't smell as much. Because it traps in the hairs under your arms and everywhere. It traps the smells. And then, children feel less confident in school. And I can see, I've learned to kind of look at the body language. And if your daughter is lumpy, don't take it choti, go down. So you think about the body language, how a person who's really tall will walk like this. I've seen that scenario once in my life. I remember what you're talking. Especially girls, they have average height, 5, 3, 4, and after that you think, इतनी लंबी हो गई है. Exactly. ये कैसा हुआ? और साथ में ये होता है, इतनी बड़ी हो गई, इसकी शादी नहीं करनी. Other thing, even the girl is, from age, she's so young, but they will say, oh, ये इतनी तो बड़ी हो गई है. It's height. Exactly. Height. Not only that, but do you know when a girl dresses up in Asian clothes, she looks older. Older, definitely. She does look older. So I just say to moms and stuff like that, let your girls explore within reason. Obviously, I'm not going to say like everyone go out nangi and all that, because I know culturally, again, we're very, very we're reserved people. So I'm not saying don't do that. Do what's right, but let the girls explore a little bit of themselves. Because what's going to happen is when we suppress them, they'll lose confidence, and do you know what, that will take them on through the whole life. हम ये चाहते हैं हमारी बेटियां कामयाब हों, अच्छी लगे, तो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहिए. I think little bit, give them a little bit of chut, because what will happen is like when they go to university, they've got all the chut in the world, and then you'll see
a difference in your child. So if you let them grow with you, and do you know what, mums, sit down and talk to your kids, but do you know what, I've learned so much from my daughters. They are the reason why I do what I do, because I'm like, okay, whatever I've done to them, how can I stop that happening to other children and stuff? Yeah, how can I help? And that's one of the reasons I do what I do, because I absolutely love, I just want no woman to suffer in silence. I want women to really kind of enjoy their lives and live it to the full, to the max, within their reasons. I agree with that, because जब तक हम अपने बच्चों से बात नहीं करते, जैसे आपने कहा कि आप अपनी बेटियों से बात करती हैं, उससे आपको पता लगता है कि मैंने उनके साथ क्या मिस्टेक की जो तुम्हें नहीं पसंद है, एंड वी लर्न, एंड कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर हम अपने तरफ से ट्राई कर सकते हैं कि हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं. एवरीबॉडी मेक मिस्टेक्स, एंड मैं ये नहीं कह सकती कि कोई भी परफेक्ट है, कोई इंसान ही नहीं है जिसने मिस्टेक ना की हो, मीना. सो एवरीबॉडी मेक मिस्टेक, एज लॉन्ग एज हम उससे लर्न कर लेते हैं कि हमें दोबारा क्या करना है, उससे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पर उसके लिए हमारा अपना कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है. यस, सो और जानकारी लेंगे आपसे मीना, जो कि स्पिरिचुअल एंड सोल के बारे में हमने अब कलर एंड सेटिंग की थोड़ी सी और बातें करें, क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं. That's fine. Right, so with the color, हमारा जो एशियन स्किन है ना, वो वार्म टोन्स है. You know, इसमें slightly yellowish है. So I'm watching your skin. I know, you look at my skin. So we have a little bit of a tone. So you know, when you wear pale colours like baby pinks, baby blues, very very pale, it makes us drains ourselves. Okay, so the best way to do it is kapde, leave it, put it onto your skin, different shades, and check. Does my face look grey, or does the reflection shine? Okay, so that's a good way of doing it. So if you put say a pale pink against your skin, and it kind of your skin, you know, when you look in the mirror, it looks a bit grey, that's not the right color for you. Okay, but you can change. You can still have a baby pink or whatever, but have a different tone. Okay, color usme dark light. Yeah, don't go lighter, because don't forget, a lot of our women we color our hair. All right, so the skin tone actually makes a massive difference on the kapda. You don't want to wear your outfits. You pay hundreds for your outfits, but then you look drained. Okay, so that's one tip I would say. The other thing is, wear the right size. Do you know what? A lot of people with labels. Okay, I wear an 18. Sometimes I have to wear a 20. If I kept saying I'm not going to get a 20, but you know what? If I wear that chota kapda, the size 18. Things are going to come up, out, and I'll look even worse. Absolutely. साथ में क्या होता है कि हर एक, I think it's try करके देख लें. Exactly. अगर आपको लगे कि labels को मत देखो. Labels को look at the fit. I always say look at the fit and not the labels. It makes a massive difference as well. The other thing is, you know, every shop, just because one shop does an 18, the other shop's going to 18. No, try your clothes on. Absolutely try everything on. ये तो मैं एकदम agree है. Yeah. Because every shop is very different. Every shop is very different. Yeah. And do you know what? I have a big, massive problem with our Asian shops. Sorry for your Asian owners there. If you're out there, please, let's have a look at it. When you say 5XL, do you know what? Don't say that to a woman. It makes her feel even worse. Or मेरे बड़े कपड़े हैं, you know, like we always say, बड़े चाहिए. Change your wordings, please change your wordings. That's horrible. It's horrible because it's happened so many times. Oh, आपकी size से कुछ नहीं है मेरे पास. Or if you do, you pay a premium for it. Especially with our clothing and stuff like that. That's what I always say. Go to the reputable people who understand women's. A man does not understand a woman's size. A man does not understand a woman. They know their kapda, they know their styles, they know everything, but they don't know a woman's body. It's all different. Every woman, because some people, we have a little bit of a belly, that's fine. Wear flowing stuff. Don't wear tight things. You know? So it's all about wearing the right fit for your body, the right colour. And you'll find, if you just do a couple of those tips and see the difference. Some of the clothes that you've got at home, or get your chunni or something, just play around with your chunnis. And do you know, if you wear, like I've got black on today, I love black. You know, it's the most universal colour. Universal safest colour to wear. But to add colour to it, like today I've added silver to it, just to make it stand out, so it just breaks the colour up. Or put a colourful scarf on it. And beige, yes, it's fine, wear beige, but add a bit more colour to it. Your lipstick, put big earrings on, you know, or a big necklace. Don't
don't do massive earrings, massive necklace, and massive bangles. Balance it out. Yeah. So if you've got big earrings, leave the neckline. And if you've got, like me, if you've got, that's probably the wrong top to wear today, but if you've got a bit of a double chin, wear something like a V-neck. If you wear your suits, have a V-neck, because you know what? It elevates. Okay, so we're learning lots of tips from you, Meena. So Meena, you're saying lots of things, which is very, very important, because we're having festivals coming, New Year coming, and our ladies will be now definitely, they will have confidence in their body, because we given so many tips to them. आज मीना ने हमें काफ़ी टिप्स दी हैं, जो कि हमारा जो सा टाइमिंग हो रहा है वो बहुत कम है, 1 मिनट रह गया, बट मैं क्विकली मेंशन कर देती हूँ. मीना ने हमें बताया कि स्टाइलिंग, अगर आपका साइज़ बड़ा, स्पेशली आप जो सी अपनी हमारी इंडियन शॉप्स होती हैं वहाँ पर थोड़ा अच्छे तरीके से बात नहीं की जाती. आई एम एग्री विद यू ऑनेस्टली. एंड पर देखिए, जो उनसे आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं, जिनको रियलिटी में पता है कि आपका किस तरीके से आपने कपड़े पहने, डिज़ाइनर जो उनसे हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, उनके पास जाएं, उनसे एडवाइस लें. वी गो ओनली 41 सेकेंड्स, सो मैं क्विकली आपका शुक्रिया करूँगी. मीना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग amazing advice to our lovely ladies, and मुझे definitely पूरा भरोसा है कि इससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा. Thank you. And I must say thank you so much for your lovely time. You made 2.5 hours. आप यहाँ पर लंदन से यहाँ पर आई हैं. Really appreciate. Thank you so much. Oh, you're very welcome. Thank you for having me. So दोस्तों, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ. ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ.